इस क्वेश्चन में कह रहा है z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero and a equals z square plus z plus 1 is real. तो जो इक्वेशन दिया हमें a equals to z square plus z plus 1, तो हम क्या करेंगे z square plus z plus 1 minus a equals to 0. ना हमें बोला है कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका इमेजिनरी पार्ट इज़ नॉन ज़ीरो. सो z में जो रूट्स आएंगे z रूट्स वो रियल नहीं होंगे, डू नॉट हैव रियल रूट्स. सो z बराबर -1 प्लस माइनस 1 minus 4 1 minus a by 2. Now see, this part is the discriminant. D is 4a minus 3. Now since z does not have real roots, obviously d will be less than 0. So 4a minus 3 less than 0. A turns out to be less than 3 by 4. Now since a is less than 3 by 4, a therefore cannot take the value 3 by 4. So option D is the right answer to this question.